Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back to the second video of this tutorial. So in the last video we have learned the basics of OOP paradigm, that why we're going to use this and how it is going to help us to model the real world scenarios, the real worlds. In this particular video we are going to focus on the implementation part, the classes and the objects implementation, and how we are going to learn to model these two concepts. Okay. So previous video में हमने last point किया था कि okay you are going to see in your surroundings, आप अपने surroundings में देखें, आपको different जो है वो चीज़ें देखेंगी, ठीक है, different objects देखेंगे, ठीक है. Those objects are actually the objects, ठीक है ना, जिनको हम entities का नाम दे रहे हैं. Definitely उनके अपने कुछ उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स आप उन्हें कह सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स आप उन्हें कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल उनका कोई कलर होगा, उनका कोई साइज़ होगा, ठीक है, उनके देयर वुड बी वेरियस थिंग जो उस चीज़ को वो चीज़ बना रही हैं, ठीक है. अब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो जिसको आपने एज एन एंटिटी चूज़ किया हुआ है, उसके डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शंस भी होंगे, ठीक है. So there would be two things जिस पे आप focus कर रहे हैं, that is your data, and those are going to be, the other thing would be your functions. Okay. So in your simple programming knowledge, for example, let me just go enhance it a little bit. Okay, now it's clear. So in your simple programming, like you have a different data types over here. You have int data type, you have char data type, and you have different data types. Okay, these data types are not going to give you a functionality कि आप जो हो वो अपने पूरे का पूरा data जो है वो model कर सको. Like if there is a data, for example, you have any size of anything, ठीक है, and you have the color of anything. So in normal programming आपका mind कहाँ पर जाएगा? How I'm going to model these things? Okay, let's take the variables. इनको हम variables में add कर लेते हैं. Okay, that's fine. That's totally perfect. But किसी भी तरह ये पर्टिकुलर डेटा टाइप्स जो हैं ये आपकी पूरी की पूरी एंटिटी को डिफाइन नहीं कर रहे. इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द बुक, तो बुक का एक अपना एक अपना साइज है, उसका अपना एक ऑथर है, उसका अपना एक एडिशन है, उसका अपना एक सन है, ठीक है ना. सो इन योर नॉर्मल प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स जैसे इंट हो गई, आपकी फ्लोट हो गई, उनमें से ऐसी कोई भी डेटा टाइप नहीं है जो एक पूरी की पूरी बुक को डिफाइन करे, क्योंकि बुक इज़ नॉट अबाउट जस्ट इंट, बुक इज़ नॉट जस्ट अबाउट चार और नॉट स्ट्रिंग और नॉट बूल वैल्यू. इट्स अ होल थिंग जो कि मल्टीपल चीज़ों से मिलकर बन रही है, ठीक है, उसको बुक बना रही है. So here what we are going to do, that of course we have different data related to the book, or we have different data function related to that particular entity. So what we are going to learn basically in the implementation कि हम लोग उस पूरी पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं, ठीक है, और उसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके ओके. बट here you are going to see कि okay somehow आप इसको क्लास का नाम दे रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं. So यहाँ पर this is not the actual thing, ठीक है. The actual this is just a टेम्पलेट और सिंपली मॉडल या प्रोटोटाइप है जिसकी मदद से आप अपने एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, क्रिएट करवाते हैं, ठीक है ना. ये जो है ये आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस रखेंगी, ये आपके इंस्टेंसेस होंगे, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते होंगे, जो किस पे बेस करते हैं, इस टेम्पलेट के ऊपर. और ये टेम्पलेट क्या करेगा, सिंपली एक डिज़ाइन देगा, एक प्रोटोटाइप देगा जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. सो द पॉइंट जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है वो ये है कि नाउ दिस क्लास वुड बी द काइंड ऑफ डेटा टाइप, a new data type, maybe ये आपने create की है तो it would be user defined data type for your upcoming objects, ठीक है, जो भी आप क्या कर रहे हैं, create कर रहे हैं. और हर ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है उसका उसके दो चीज़ें होंगी, उसका अपना एक डेटा होगा, उसके अपना एक फंक्शंस होगा, ठीक है. सो हाउ वी आर गोइंग टू मोल्ड दीज थिंग्स इनटू आवर क्लास. सो लेट्स सपोज कि हमारा जो डेटा है जिसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज टू थिंग्स, डेटा और ये फंक्शंस, दोनों को हम सिंपली क्या कहते हैं, मेंबर्स का नाम देते हैं, ठीक है. जब ये क्लास हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन दोनों को हम मेंबर्स का नाम देंगे. सेकेंडली, डेटा के लिए हम नॉर्मली अपने वेरिएबल्स को ही चूज करेंगे, ठीक है, कोडिंग में.
और इन फंक्शंस के लिए हम नॉर्मली अपने फंक्शंस ही बनाएंगे, ठीक है। फ़र्क कहाँ आएगा, बस हम इन दोनों चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देंगे, बंद कर देंगे, कैप्सूल कर देंगे एक बॉक्स में, कंपार्टमेंट बॉक्स में, जिसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। कौन सी? जाहिर है इस पर्टिकुलर बॉक्स का, इस पर्टिकुलर क्लास का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है, जो उसको क्या कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा कि ओके मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का डिज़ाइन हूँ, ठीक है। और देन वी हैव सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स, दीज वुड बी द स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स, जिसको हम डेटा मेंबर्स का भी नाम देंगे, ठीक है। डेटा मेंबर्स कह दें, एट्रीब्यूट्स कह दें, सही हो गया, जो कि डेफिनेटली बता रही हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। दिस वुड बी द स्टैटिक, ओके। नाउ इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, या इन चीज़ों को वैल्यूज असाइन करने के लिए, या इन वेरिएबल्स के डेटा को संभालने के लिए, इस डेटा को ऑपरेट करने के लिए, वी हैव द फंक्शंस ओवर हियर, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें इस तरीके से आएंगी। Now these functions would be called the member functions. Both these things would be called as a members, and these functions would be called as a member functions. Okay, so these member functions are going to operate on this particular data. How or in what manner we are going to see in our coding. Okay, so let me clear all this, and if I'm going to move over my coding part, I hope so कि आपको visible होगा ये. So यहाँ पर how I'm going to make my class, ठीक है. Class making is typically so easy. All you have to do is to declare the class, okay. So just write the class, and of course you have any kind of class name over here, okay. Normally you can do it in a capital way, okay, class name, and then class की अपनी एक body होगी, शुरू होगी, बंद होगी, ठीक है ना. Now this is very important कि if this thing is our class, तो class की body यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है. इस बॉडी के अंदर अंदर जितना भी पार्ट होगा वो इनसाइड द बॉडी कहलाएगा, ठीक है. और ये अपनी क्लास का स्कोप है, ये इनसाइड द बॉडी है. इस क्लास के स्कोप के बाहर जो भी कुछ आएगा वो सारा क्या होगा, आउटसाइड द क्लास होगा, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू यूज दीज टर्म्स, दैट्स व्हाई आई एम and the other thing over here ke maybe it's not an as a rule, but somehow it's recommended ke use a capital letter for the class, and always use a semicolon at the end of the class ending, ठीक है. ऑलरेडी यू हैव लर्न द स्ट्रक्ट, मैं उसकी सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो ओवर हियर आई हैव डेटा मेंबर्स, okay, and then over here I have the member functions, ठीक है. डेटा मेंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, मेरे पास सिंपल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है. और मेंबर फंक्शंस जो हैं वो मेरे पास सिंपल फंक्शंस होंगे. आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी 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 सिंपल प्रोग्राम, ठीक है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग का, जिसमें मैं कोई भी ट्रेंडी हमारे पास जो ट्रेंड में आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेंडी स्टेटमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है. ट्रेंडी स्टेटमेंट या ट्रेंडी सेइंग, दैट वुड बी फाइन. ओके, सो दिस इज हाउ, लाइक मैं इस तरह के इंट वेरिएबल, इंट चार डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स को लेकर मैंने यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए. डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू कॉल द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस. एट द अदर पार्ट मेंबर फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जो कि इन पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल डेटा मेंबर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है. सो लेट मी मेक वन सिंपल फंक्शन दैट इज गोइंग टू प्रिंट 20 थिंग, बट अभी मैं क्योंकि सेपरेट बात कर रही हूँ तो अभी मैं इसका सिंपल नाम ही रख देती हूँ. फंक्शन इज गोइंग टू मेक एज अ नॉर्मल फंक्शन जो कि आपने लर्न किया हुआ है, ठीक है. एंड दैट फंक्शन डज only the printing of one statement over here, okay, and that statement is what's in that trend, Black Lives Matter, but I think every life matters, okay. So this should be the trendy thing for now, okay. So that's a function basically that is going to print the every life matters, or simply या हमारे पास ये एक simple एक class create होगी. So that's typically a class, ठीक है. It's going to have the data members over here, it's going to have the functions over here. That function normally operate on these
data members, but right now I'm just specifying separate functions like मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको सेपरेट बता रही हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी सेपरेट बता रही हूँ, तो अभी मैं इस चीज़ को काफ़ी सिंपल रख रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर हमने जो है वो अपनी क्लास जो है वो डेवलप कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब इट मीन्स के इनसाइड दिस क्लास ये क्या बन गई है, एक लेट्स सपोज क्लास नेम यहाँ पर हम ट्रेंड के नाम से एक क्लास बना देते हैं, ठीक है। सो आई मेक अ वन क्लास सेम ट्रेंड, ठीक है। और वो ट्रेंड की क्लास क्या करती है, सिंपल एक फंक्शन को क्या करती है, प्रिंट करवाती है, ठीक है। अब आउटसाइड द क्लास मैंने सिंपली क्या कर लिया इसके, अब मेरे पास ये क्या है, ये एक, अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखूँ तो दैट्स जस्ट अ डिज़ाइन, ठीक है। इसकी अपनी कोई एक्चुअल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अभी ये कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आएगा अनटिल अनलेस मैं इसको एक प्रॉपर नेम ना दे दूँ, लाइक बुक, लाइक कार, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट लर्निंग के हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, ठीक है। सो अल्टीमेटली आई हैव टू use somehow, there must be any mechanism इसके थ्रू मैं इन पर्टिकुलर फंक्शंस को बाहर यूज कर सकूं आउटसाइड द क्लास, ठीक है। सो रिमेंबर दैट थिंग, जो एक मैंने टर्म यूज की थी, दैट वाज कॉल्ड द डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि हमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में नहीं मिल रही थी, एंड वी सेड कि समहाउ हम लोग उसी डाटा को और उसी फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर देंगे एक पर्टिकुलर बॉक्स में, कंपार्टमेंट बॉक्स में, जिसमें अपने कुछ स्टैटिक मेंबर्स होंगे और उसके अपने कुछ डायनामिक मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। and that's how we are going to create a security, but somehow there must be something जो कि security को क्या कर रही है actual में implement कर रही है, ठीक है। so we have some kind of SS specifiers over here, ठीक है। so normally SS specifiers are three kind of SS specifiers, जिसमें हमारे पास public है, private है, protected है, and I'm going to make a separate video on it, ठीक है। so let's suppose मेरे normally जो functions होते हैं वो public होते हैं, ठीक है। और public को how I'm going to write a public, I'm just going to write this public in a way, okay, so how it's going to be public, I'm going to write this as a public with a simple colon sign over here, okay। so keeping it as a public, I'm just saying that if I have used the public specifier here, so I'm going to allow anyone outside the class, like इस scope से बाहर चाहे मेरा मेन आ रहा है, चाहे मेरी कोई दूसरी क्लास आ रही है, या whatsoever कुछ भी आ रहा है, आई एम जस्ट अलाउइंग कि एनीथिंग क्लास के अंदर जो कि पब्लिक होगी वो सिंपली जो है उसको कोई भी क्लास के बाहर जो है वो असेस कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द पब्लिक। so you can so if you have used or any member of your class is declared as a public access specifier, so it means that you can access from anywhere in the program, ठीक है। so normally these functions are always declared as a public. Why public? Because somehow as I'm repeatedly saying this thing कि these are the functions जिसके जरिए हम इन data members को handle करते हैं, data members को access करते हैं, या फिर somehow deal करते हैं इनके साथ। so अगर हम somehow इन दोनों को ही secure कर देंगे कि no one is going to access them from anywhere in the program, so हमारे पास फिर ये class pack ही रह जाएगी, we can't access it, so somehow we just save the sensitive data, ठीक है, by using some kind of secure access specifier, but somehow उस secure access specifier को कोई class से बाहर access कर सकता है या नहीं कर सकता, we will see in a moment, but somehow we have some scenario, we have some criteria जिसके through जो है वो हम उन particular sensitive data को जो है वो access कर सकें, ठीक है। so I'll repeat all these things in a moment. So for now I'm just clearing all these drawings. So for now I have a simple functions like 20 saying, so how I'm going to use call it or use it outside the class. So यहाँ पर आता है हमारे पास object का concept, ठीक है। Object would be something जिसके थ्रू हम अपने क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर असेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू टू वेज जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं, आप कहेंगे लेट्स मैं सिंपल जो है वो ट्रेंडी फंक्शंस को पकड़ के कॉल कर दूं, ठीक है, that's how I call my 20 saying function, but no, because it's a part of a class and in your program somehow is one way to understand this thing, that you have
bunch of different classes and the functions in your whole project. ठीक है, मे बी आपके पास एक क्लास 10 की है, आपके पास दूसरी क्लास हो, तीसरी क्लास हो, चौथी क्लास हो, और मे बी उनमें से किसी क्लास के पास भी एक सेम नेम का फंक्शन हो. सो हाउ योर कंपाइलर इज गोइंग टू नो कि मुझे किस क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करना है. ठीक है, so every time when you are creating your object, ठीक है, that's definitely have a physical existence. And how you what would be the syntax of it, that you have to take the class name. Okay, so this is the class, and इस क्लास का जो है वो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ. ठीक है, सो आई हैव अ trendy ऑब्जेक्ट over here. ठीक है, but somehow my normal scenario would be कि मैं इसको किसके अंदर बनाते हूँ, मेन के अंदर. ठीक है, so I have this main over here and I'm going to create an object. ठीक है, if from this particular object, like this is my object, okay, this has the actual existence, and somehow इसके पास memory के अंदर किस चीज़ की access है, this TO object can access everything that is inside this, you know, class. Okay, okay, so if you are going to call it with TO, and how you are going to assess these members, whether you are assessing your data member or your member function with the help of this object over here, all you have to do is to use the dot operator. Okay, so dot operator is just like with the help of dot operator you are going to call everything that is accessible from this portion over here, okay, outside the class. So what is the accessible from outside the class, हमने अभी बात की एवरीथिंग क्लास के अंदर जो कि आपने पब्लिक के नीचे नीचे लिखा है वो तमाम आउटसाइड द क्लास कहीं भी जो है वो असेसेबल है. ठीक है, सो अब आप उसको कैसे असेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. सो द थिंग वी हैव द पब्लिक ओवर हियर, वो उसने यहाँ पर खुद ही जो है वो स्पेसिफाई कर दी है. सो वी कैन यूज दिस फंक्शन, वी कैन कॉल दिस फंक्शन ओवर हियर. सो let's suppose if we are going to see out, not just, we don't need now this see out over here, so let it just, you know, and let it simply run, and when we are going to run this, and over here it should print every life matters. Yeah, okay, so what actually happened, this is so easy to know, uh, easy to understand. What actually happened that we have make the object over here, और ये object किसका है, इस particular class का. ठीक है, तो one thing I have told you guys कि okay, मतलब you need to write, you need to declare an object, you need to create an object, and with every object सैंटेक्स में आपने उसकी डेटा टाइप लिखनी होती है. ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी, उसकी क्लास. ठीक है, जो कि अभी अभी आपने यूजर डिफाइन यहाँ पर क्लास बनाई है. सिमिलरली व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग एन वेरिएबल्स, तो आप हर वेरिएबल के साथ उसकी डेटा टाइप लिखते हैं जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, इंट है, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड द conceptually is this, कि you have to write the data types after creating every object. Okay, before, I mean. And the other thing that of course you have a multiple, you can stand in this way, you have multiple classes over here, and definitely you need to tell the compiler, okay, मैं इस particular class का जो है वो object create करना चाह रहा हूँ. ठीक है, the third thing is this, कि this thing over here is the design. Class is always a design. ठीक है, but in actual you don't have something, you know, right now जो कि physical existence रखता हो. ठीक है, so this thing doesn't have any physical existence. ये सिर्फ एक डिज़ाइन है जो कि आपको member functions members दे रही है और आपके member functions दे रही है. इनके ऊपर इनको असेस करते हुए जो हम physical existence बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की बनाते हैं. so for this class सिर्फ अभी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कोई फिजिकल आइडेंटिटी है, that is TO. ठीक है, and with the help of this class we can make multiple objects over here and with the same criteria. ठीक है, but of course with a different name, but all have their different existence, their different identities, क्योंकि ये सब separate objects. ठीक है, so this was the thing. Let's just clear all the annotations over here, and definitely I'm going to do some code
for the data member. I know this is going to be too lengthy, but definitely I'm going to cover some particular students for this video, और जो next ones है उस पे हम जरा in a fast way जो है वो अपना कोड करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सो हमारे पास जो दूसरी चीज़ है जो कि आती है, दैट इज़ द डेटा मेंबर्स ओवर हियर, ठीक है? सो ये डेटा मेंबर्स हमारे पास, लेट सपोज मैंने 20 सिंह के नाम से लिया है, आप कोई भी इस पे जो है वो डिफरेंट ले सकते हैं, योर इंट काइंड ऑफ डेटा, योर स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा, वट एवर द डेटा, ठीक है? सो इफ आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर डेटा मेंबर ओवर हियर, so what can I do? Either I have to make it public like I did for the previous one, और if मुझे इसको कुछ assign करना है, it's an empty variable, so what I have to do, I have to let's suppose I have to get that 20 saying, or let's suppose this thing over here, but I have the same name of function and variable over here. Okay, so that 20 saying इस particular में हम क्या रखवा सकते हैं, like we did in previous. Let me just comment that so that I can just focus on data member right now. Okay, so let me just do this thing. Okay, I just practice the Python criteria of commenting the multiple lines. ठीक है जी. So somehow हमारे पास जो है वो एक I just make a simple way. So let me just see out this thing, and if I'm going to see out this particular variable over here, that is the 20 saying. Okay, so let me copy this. So what I have actually done, I just simply, I can't access this thing without the object, so just like this. Okay, so I have simply assigned this string value, okay, to this thing. Can I access this? Yes, of course. अगर हम ऊपर देखें तो मैंने अभी अपने फंक्शन को, डेटा मेंबर को क्या बनाया है, सिंपली पब्लिक बनाया है. तो ये पब्लिक, बाय पब्लिक आई मीन that I can access this from anywhere in my program, ठीक है? So how I can access? By the help of the object of this class. I just access this particular member with the help of this object, and I assign any value to this variable, and then I'm going to print this variable. So what particular value it's going to give me in my output? Yeah, so it's the similar as I expected, every life matter. So the thing is this the right way of declaring variable? So making making class variable public is not a good strategy. Okay, so when you make them a public, so it means that it is easily accessible for everyone outside the class to easily access it, change it, and use it whatever the way he or she want. Okay, so ultimately अगर हम देखें तो this is our actual data, ठीक है? And if data is always sensitive, ठीक है? So we cannot allow anyone के जो इस तक access ले सके बड़े आराम से, ठीक है? So what we have to do, we have to use another specifier that is going to call the private. Okay, so private data member जो है वो simply क्या करेगा? Private कैसा है कि if private access, you are going to use private access specifier, then it means that this is going to restrict the use of class member outside the class. Okay, for example, this member over here can may be accessible inside the class anywhere, but it cannot be accessible from outside the class. Okay, so these typical terms I will use in my next videos, where I will be more quick as compared to this particular video, as this video is just for some bunch of groups, not for the whole globally targeted. Okay, so somehow I have created this variable, and I can access it from here. No, I can't now. So let me just run it, and it will definitely give me
error. Okay, so what kind of error it is, and that is obviously the error cannot assist the private member declared in the class. Okay, so definitely I cannot use any kind of private member. So if I have to set this value over here, so what can I do? So there are different techniques that I can do. As I already said कि if anything is private over here, तो उन private members को हम किसके through access करते हैं? अपने member functions के through. ठीक है? So member functions जो हैं वो हमेशा public होते हैं. क्यों? ताकि वो हम अपने main function के अंदर या outside the class जो है उनको access कर सकें. और जब हम उनको access कर सकेंगे तो उनकी मदद से हम अपने जो data members हैं उनकी values को सेट करवा सकेंगे. ठीक है? So let me just tell a simple function that is going to set a value. ठीक है? So it must be a simple function like set saying. Yeah, and what set saying is going to do, it is going to accept a string parameter like any 20 thing, and in this object it is just going to assign the ts value. ठीक है? इसको ts value assign कर रहा है मेरे data member को, and my data member is 20 saying. Okay, so this is how I'm going to set my value. And definitely if I have set this thing, so I have to get this function. You may be surprised कि इसको हमने discuss नहीं किया. तो as I already said कि this is targeted only for some particular group, and I will make other videos जिसमें मैं हम इसको separately क्या करेंगे, discuss करेंगे. So in end I am going to make a function एक जो कि क्या कर रहा है, इस particular वेरिएबल को जो मैंने सेट करवाया है किसी वैल्यू से, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा. तो फॉर दैट मैंने एक और फंक्शन बनाना है जो सिंपली जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा. तो उसका हम नाम रख देते हैं गेट saying. ठीक है? तो जो फंक्शन हमने अभी अभी बनाए हैं इनका एक सेपरेट नेम है जिसको हम गेटर्स और सेटर्स का नाम देते हैं. ठीक है? गेटर और सेटर जो है वो वैल्यूज को असाइन करते हैं किसको, हमारे डेटा मेंबर्स को. ठीक है? बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट use this thing 20 saying. Okay, so ultimately in my main I'm just going to raise this function for now. In my main I have make an object. ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपनी डेटा मेंबर को तो एक्सेस नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? उसकी रीज़न ये है कि वो प्राइवेट है. सो आई कैन ओनली एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ओवर हियर. तो जो पब्लिक मेंबर्स हैं उसके अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं जिसमें से एक फंक्शन जो है वो मेरे डेटा मेंबर को सेट करवाने के लिए यूज़ हो रहा है, और जो इसको हम नॉर्मली सेटर का नाम देते हैं. हम सेटर को क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्टिकुलर वर्क जो है वो आपको कंस्ट्रक्टर के साथ सिखाया जाएगा. ठीक है? सो हम नॉर्मली सेटर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपली जो है वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने डेटा मेंबर को. ठीक है? एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव माई गेटर फंक्शन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू कॉल द गेट saying. और मैं ये गेट saying का फंक्शन क्यों यूज़ कर रही हूँ, जो कि अभी अभी मैंने अपने सेटर फंक्शन के थ्रू अपने 20 saying के मेंबर को, वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की है, आई वांट टू गेट दैट वैल्यू. ठीक है? So how I'm going to get that value? For that I have make another function, simple function that is also called the getter function, that is only going to return this particular value over here. Okay, so ultimately I have did one mistake over here. I just I have to type the actual data type. That 20 saying is basically the string type, and I have to return the string type over here. Okay, so now I have to first of all, if I want something in this member variable, तो मुझे सबसे पहले इसमें कोई वैल्यू सेट करवानी पड़ेगी. तो सेट करवाने के लिए मुझे सेटर का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और सेटर का फंक्शन जो है वो उसको कॉल करने के लिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर आई कैन कॉल the function that is called set saying. And set saying function जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई एक string type की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है? तो जो string type की वैल्यू मैंने यहाँ पर देनी है वो क्या देनी है, मैंने वही देनी है जो I want it from. ठीक है? For example, what I'm going to use, I'm going to use this 20 saying that called every life matters. Okay, and now with this
एज अ पैरामीटर ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और एज अ पैरामीटर ये वाली वैल्यू जो है वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर भिजवाएगा। टीएस जो है वो इस वैल्यू को पकड़ेगा और टीएस जो है इस वैल्यू को किसको भिजवा देगा, 20 स्ट्रिंग के डेटा मेंबर को, ठीक है। एंड नाउ इफ आई वांट टू यू नो गेट दिस वैल्यू, तो उसके लिए मैंने एक अपना फंक्शन बनाया गेटर का, जो कि इस के वेरिएबल के मौजूद इस वेरिएबल के अंदर मौजूद किसी भी वैल्यू को क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, I am simply calling the with the help of my object, I am calling the function that is called getSing. Okay, but definitely if I actually see the criteria of this function, that function is going to return something. Okay, so either मैं यहाँ पर simply see out के through ये value type करवा लूँ, या फिर यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई string type का एक variable होना चाहिए जो कि इसको पकड़ सके, ठीक है। सो लेट सपोज कि मैं एक सिंपली वेरिएबल, आपको दोनों काम करके दिखा देती हूँ। सिंपली मैंने एक वेरिएबल बना लिया और आई एम गोइंग टू मेक दैट वेरिएबल लाइक दिस स्ट्रिंग saying, okay, so here it's going to cache that value, and here with the help of cout it's just printing that thing, okay. So enter over here. So if I'm going to run this thing, so this will shows our 20 saying every life matters over here, how I have shown the detail of this code over here, okay. But if you are not satisfied with this thing, all you can do, you don't need these separate extra variables over here, just print it out this thing, like I'm going to erase everything that is extra, and let us just run it. So you see every life matters, okay. So that was all from my side in this video. Actually this video covers एक काफ़ी lengthy video थी, जो कि I just repeatedly saying कि we have some targeted audience. ये video जो है वो separately उनके लिए बनाई गई थी, जिसमें एक detail explanation दी गई थी. In my next video I'm going to focus on some examples, ठीक है, जो कि code examples होगा, और उसमें हम जो है वो we are just going to focus on particular simple examples, okay. So thanks for watching, and subscribe and like this.